लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, डेल्टॉइड मसल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट. So many MCQs are asking, and also in the viva there are question on the deltoid. Specifically viva में इसका origin, insertion, why it is strong muscle, which fibers are multipinate, like this viva questions along with the nerve supply. These are the major questions asked in the viva. थेरी पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है. इन ऑल मसल्स अगर किसी मसल पे कोई शॉर्ट नोट पूछनी है तो सबसे पहले डेल्टॉइड पे पूछी जा सकती है. तो दैट इज अबाउट द डेल्टॉइड. ओके, सो इन द इंट्रोडक्शन, वेयर इट इज सिचुएटेड डेल्टॉइड मसल? इन द शोल्डर. Okay, so rounded counter of the shoulder is because of the deltoid. It is very thick and the strongest muscle. Okay, shape of this muscle is triangular in shape. So this is a triangular in shape situated over the counter of the shoulder and one of the thick and the strongest muscle of the upper limb. It is a delta shape as that of the, that's why it is called as a deltoid. Okay, so this muscle is having a three parts. Okay, one part which is lies origin from the anterior part, that is anterior. Middle part is called as acromial and the posterior part, and these three parts are different. Anterior part is the unipinate muscle, middle part is a multipinate muscle, and posterior part is unipinate type of muscles. Okay, now what is the origin of deltoid? So it has a three origins. Origin of the deltoid. Now before the origin we started, तो हमको देखना है कि ओरिजिन कहाँ से आ रहा है. उससे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये रहा स्कैपुला, ये उसका कोरोकॉइड प्रोसेस. फिर यहाँ से नीचे आता है ग्लिनॉइड कैविटी, ये पूरा ट्रायंगुलर. ये आता है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, आगे चल के ये बनाएगा एक्रोमियल प्रोसेस. ये रहा पोस्टीरियर व्यू. अगर हम पीछे से देखें तो ये रहा पोस्टीरियर व्यू, और यहाँ पे समवेयर आएगा क्लैविकल अटैचमेंट एट द एक्रोमियल प्रोसेस. ओके, तो ये रहा एंटेरियर साइड, ये रहा पोस्टीरियर साइड. तो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला का जो पोस्टीरियर साइड है, ये वाला, दैट इज पोस्टीरियर फाइबर्स ओरिजिन. फिर आता है एक्रोमियल प्रोसेस, ये वाला, दैट इज द मिडल फाइबर्स. एंड फिर आता है क्लैविकल, एंटेरियर एंड द सुपीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल. ओके, फिर यहाँ से पूरा वो ओरिजिन होगा और डेल्टॉइड इस तरह से नीचे जाएगा इन अ ट्रायंगुलर शेप. तो ये रहे पोस्टीरियर फाइबर्स, ये रहे एंटेरियर फाइबर्स, और ये आते हैं मिडल फाइबर्स. दैट फॉर्म्स द डेल्टॉइड. अब ये डेल्टॉइड यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी, तो यहाँ पे आएगा ह्यूमेरस और ये शाफ्ट ऑफ द ह्यूमेरस. इसके मिडल पार्ट पे यहाँ पे आता है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी. ओके, एंड ऑल दिस फाइबर्स जो यहाँ पे है वो इंसर्ट हो रहे हैं यहाँ पे. तो दैट इज द फर्स्ट ओरिजिन, सेकंड पार्ट ऑफ द ओरिजिन, एंड थर्ड पार्ट, एंड इंसर्शन इज एट द डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी. सो व्हाट इज ओरिजिन ऑफ द डेल्टॉइड? Origin of the deltoid is taking from the 3 points or the 3 parts of the origin. First one is the anterior fibers. These are the unipinate muscle. एक ही टाइप के मसल है, एक ही डायरेक्शन में मसल है, यूनिपिनेट, एंड दे ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस एंड एंटेरियर सरफेस और एंटेरियर बॉर्डर ऑफ द क्लैविकल. ओके,
So that origins mainly lateral 1/3 part of the clavicle, superior surface and anterior surface of the clavicle, lateral 1/3. These are the unipinnate fibers anterior. Middle fibers, they originate from acromial process. These are called as acromial fibers. These are multipinnate fibers. So multipinnate means their arrangement is like this. ये फाइबरस सेप्टा रहेगा और दोनों बाजू से फाइबर्स आते हैं. Like this multipinnate fibers are there. यहाँ से आएंगे anterior fibers, यहाँ से आएंगे unipinnate posterior fibers, and this is the insertion of the deltoid on the deltoid tuberosity. So middle fibers are the multipinnate fibers originating from the acromial process. Which part of the acromial process? Lateral border of the acromial process and the upper surface of the acromial process. Okay. These are the middle fibers, and the posterior fibers originating from the spine of scapula, lower border of the spine of the scapula. These are again unipinnate type of fibers. Okay, so specifically middle fibers are the multipinnate fibers. So why the middle fibers are multipinnate fibers? So these middle fibers causes mainly abduction at the shoulder joint, and for the abduction more power is required, and that's why for more power there is required the more number of fibers. So power of the any muscle not depend on the length. कितना बड़ा मसल है उस पर उसकी पावर नहीं है, कितनी लेंथ मसल फाइबर्स की उसमें. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, मोर नंबर ऑफ फाइबर्स more the powerful muscle, not the length. So though the deltoid is a small muscle, lies only in the shoulder, it is a very very powerful muscle because of this multipinnate arrangement. And in this multipinnate arrangement, what happens? The number of fibers is get increased, so the power of the muscle is get increased, and multipinnate muscle are responsible for the abduction. It lifts the whole weight of the upper limb, and that is the importance of the multipinnate muscle. So origin हो गया, हमने देखा anterior fibers unipinnate from the clavicle, superior surface and anterior surface. Middle fibers from the acromion, lateral border of the acromion and upper surface. These are the multipinnate fibers. These are the most powerful fibers because the number of muscle fibers are more in it in a small space. Posterior fibers from the spine of the scapula. These are the unipinnate and originating from the lower border of the spine of the scapula. Where is the insertion of the deltoid muscle? It is inserted on deltoid tuberosity. Where is the deltoid tuberosity? At the middle of the shaft. At the middle of the shaft on the lateral part there is a deltoid tuberosity, inward U-shaped, and at that there is a insertion of the deltoid muscle. What is the nerve supply of the deltoid muscle? Deltoid muscle is the supplied by axillary nerve, root value C5, C6. So axillary nerve supplies the deltoid. Okay, which fibers of the deltoid are the strongest? Acromial fibers, because they are multipinnate fibers. Now comes to the action of the deltoid muscle. So we have three fibers: anterior, middle fibers and the posterior fibers. So anterior fibers, anterior part पे रहते, they causes the flexion at the shoulder joint, okay, and the medial rotation at the shoulder joint. Posterior fibers, इसके opposite action, extension and the lateral rotation of the shoulder joint, and the middle fiber causes abduction at the shoulder joint, mainly 15 degree to 90 degree of abduction. जो फर्स्ट 0 to 15 डिग्री ऑफ एबडक्शन ये कौन करता है? सुप्रास्पाइनेटस. सो 15 to 90 degree of abduction is caused by the middle fibers. So that is the main action. And which muscle fiber causes abduction at the shoulder joint? Acromial fibers or the middle fibers causes the abduction at the shoulder joint.
सो हमने देखा ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन. What is the advantage of being a multipinate acromial fibers? It becomes more powerful, and that's why these fibers are multipinate to have a 15 to 90 degree of abduction at the shoulder joint. Then the next question is deep structures to the deltoid. So what structures lies below the deltoid? That is the next question. So हमने देखा ये स्कैपुला, ये कोरॉइड प्रोसेस, ये ग्लिनोइड कैविटी, और यहाँ पे आता है ह्यूमरस. यहाँ पे आएगा स्पाइन, ये एक्रोमियल प्रोसेस. सो एंटेरियर साइड पे स्पाइन से एक मसल आता है, देयर इज अ सबस्कैपुलरिस. सबस्कैपुलरिस पोस्टीरियर साइड पे आता है, यहाँ से सुप्रा स्पाइनेटस, यहाँ पे आता है इंफ्रा स्पाइनेटस, यहाँ पे टेरेस माइनर, यहाँ पे टेरेस मेजर. एंटेरियर साइड से कौन आएगा? पेक्टोरलिस मेजर मसल आएगा. ओके. सो कोरॉइड प्रोसेस पे कौन कौन इंसर्ट रहता है? यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर. ओके. टिप ऑफ द कोरॉइड प्रोसेस से आगे जाएगा कोरेकोब्रैकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप. मैं उसका डायग्राम यहाँ पे निकाल देता हूँ. तो ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है. तो यहाँ पे लैटरल लिप पे आएगा पेक्टोरलिस मेजर आगे से, यहाँ पे आएगा टेरेस माइनर, यहाँ पे मीडियल लिप पे आएगा टेरेस मेजर, यहाँ से आएगा सबस्कैपुलरिस फ्रॉम द यहाँ पे, तो वो आता है लेसर ट्यूबरकल पे. सो विच आर द स्ट्रक्चर्स विच लाइज बिलो द डेल्टॉइड मसल और अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड? फर्स्ट बोन्स. बोन्स में कौन से दोनों बोन आएंगे? ह्यूमरस एंड स्कैपुला. तो स्कैपुला का विच पार्ट? ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, कोरॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, बोन्स में. जॉइंट्स में कौन आएगा? जॉइंट्स में कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट. सो देयर लाइज द शोल्डर जॉइंट. एंड ऑल्सो यहाँ पे क्लेविकल आता है, तो को एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट. तो जॉइंट में दो चीज़ें आ गई, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट एंड द शोल्डर जॉइंट. ओके. So there is also coracoacromial ligament is also attached over there. Okay. So in the ligament, coracoacromial ligament is there, and glenohumeral ligament of the shoulder between the glenoid cavity and the humerus. So glenohumeral ligament and coracoacromial ligament. So bones हो गए, joint and ligaments हो गए. फिर आते हैं कौन कौन से मसल्स. मसल्स में एंटेरियर साइड से आएगा पेक्टोरलिस मेजर. ओके. पेक्टोरलिस माइनर आएगा एंटेरियर साइड से, सबस्कैपुलरिस आएगा. पोस्टीरियर साइड से कौन कौन से मसल आएंगे? ये वाले सारे, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस, टेरेस माइनर, टेरेस मेजर. ओके. एंड कोरॉइड प्रोसेस से कौन कौन आएगा? कोरॉइड प्रोसेस से देयर इज शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप आएगा, फिर वहीं पे नीचे से आएगा लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप एंड कोरेकोब्रैकियलिस आएगा. सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप आएगा, फिर नीचे से लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप भी आएगा. सो दिस आर ऑल मसल्स लाइज बिलो द डेल्टॉइड. सो शोल्डर जॉइंट के अराउंड जितने भी मसल है, कौन कौन से मसल रहेंगे? स्कैपुला से, स्कैपुला के आगे के एंड पीछे के मसल. आगे से सबस्कैपुलरिस आएगा, पीछे से सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, मिडिल बॉर्डर के पोस्टीरियर साइड से टेरेस माइनर, टेरेस मेजर आएगा. कोरॉइड प्रोसेस पे आएगा शॉर्ट कोरेकोब्रैकियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप एंड द पेक्टोरलिस माइनर भी वहाँ पे इंसर्ट होता है. मीडियल लिप ऑफ द ह्यूमरस पे आएगा टेरेस मेजर का इंसर्शन एंड टेरेस मेजर का इंसर्शन, लैटिसमस डॉर्सी मसल का इंसर्शन, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप आएगा, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप आएगा, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप आएगा. ये सारे मसल्स आएंगे. वेसल्स में आएगा जो सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के अराउंड जो वेसल्स है, एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल
आर्टरी दैट कम्स टू द वेसल। नर्व में आएगी एक्सिलरी नर्व, एक नर्व दैट लाइज बिहाइंड इट। एंड द स्पेसेस में आएगा स्पेसेस अराउंड स्कैपुला, मेनली quadrangular space and upper triangular space on lower triangular space. So two triangular spaces and quadrangular spaces. So these are the all structures which lies under cover of the deltoid. Then comes the applied part. What is the applied part related to the deltoid? Deltoid is one of the common site give intramuscular injections. So intramuscular injections are given in the deltoid. So where it is given specifically, अगर ये deltoid muscle है which insert over here and this is the shoulder. Okay, here you can palpate the acromial process, and below the acromial process 3 centimeter is the site for giving the intramuscular injections. So near about 3 to 5 centimeter below the acromial process, you have to put your 3 fingers below the acromial process in the middle part of the shoulder, where you can give the intramuscular injections to avoid injury to axillary nerve. Deep to it lies the axillary nerve. So to avoid injury to the axillary nerve, the site is the 3 to 5 centimeter below the acromial process. So that is the applied part related to it. Second, paralysis of deltoid will lead to the loss of abduction, mainly which 15 degree to 90 degree of range of movement there is loss of abduction. Third applied part, there is a paralysis of the deltoid muscle. If the axillary nerve get injured, then a rounded counter of the shoulder is lost. Rounded contour of the shoulder is lost. Okay, whatever the rounded contour is lost, and instead of this neck and this rounded contour of the shoulder, it looks like table corner. So shoulder become a table corner. So table corner shoulder deformity because of the paralysis or atrophy of the deltoid muscle. So these are the all applied part you can write in the deltoid. So that is very important short note for exam point of view. So if you like, so you अब क्वेश्चन में आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने डेल्टॉइड का इंट्रोडक्शन लिखा, आपने ओरिजिन में ये डायग्राम निकाल दिया तीनों फाइबर्स। ओके, फिर ओरिजिन लिखा, आपको मिडल फाइबर में डिटेल में लिखना है व्हाई द डेल्टॉइड इज मोस्ट पावरफुल मसल बिकॉज ऑफ मल्टीपिनेट मसल, व्हाई मल्टीपिनेट अरेंजमेंट इज देयर फॉर द मिडल फाइबर्स ओनली बिकॉज देयर आर एबडक्टर, फॉर एबडक्शन more power is required. What is advantage of being multipinnate? These become more powerful muscles. Why these become more powerful? Because the power of the muscle depend on the number of fibers, not the length of the fibers. So in a short or small space, the number of fibers is get increased because of this multipinnate arrangement, and deltoid middle fibers becomes more powerful. That you have to write. देन देर इज इंसर्शन ऑन द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, नर्व सप्लाई लिखना है एक्सिलरी नर्व, फिर एक्शंस में एंटीरियर फाइबर के एक्शंस, पोस्टीरियर फाइबर के एक्शंस एंड मिडल फाइबर के एक्शन. ओके, दैट यू कैन राइट. एंड देन स्ट्रक्चर्स अंडर कवर ऑफ द डेल्टॉइड का आप डायग्राम निकाल सकते हो. एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला से ह्यूमरस तक कौन कौन से मसल जाते हैं, दीज आर ऑल स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद. आप यहाँ पे वेसल्स की भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, एक्सिलरी नर्व की भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे. एंड देन कम्स टू द एप्लाइड पार्ट. एप्लाइड पार्ट में आपको लिखना है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, क्यों वही स्पेसिफिक साइड पे देना है टू अवॉइड इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व व्हिच लाइज इन द डिपर इन द लोअर पार्ट. लॉस ऑफ एबडक्शन मूवमेंट होगा पैरालिसिस में. अगर पैरालिसिस हुआ तो राउंडेड काउंटर लॉस होगा, उसमें टेबल कॉर्नर शोल्डर बनेगा. सो दिस विल गिव्स यू अ मोर मार्क एंड स्कोरिंग मार्क. दैट्स इन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. विच फाइबर्स आर मल्टीपिनेट, इस पे एमसीक्यू आता है. विच नर्व सप्लाइज द डेल्टॉइड, इस पे एमसीक्यू आता है. देन एक्शंस, कौन से फाइबर्स कौन से एक्शंस करते हैं, कितना डिग्री का एबडक्शन होता है 15 टू 90 डिग्री, तो फर्स्ट 15 डिग्री कौन करता है, मोर देन 90 डिग्री कौन करता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए. ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं एंड वाइवा में इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ़ यू स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द video,
this whatever discuss about the deltoid, if it adds a value in your knowledge, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।